Hello everyone, welcome to APPSC. So we are in the discussion of down to earth. So already we have done with February month down to earth articles. So wherever जहाँ पे भी ज़रूरत था कि लाइक वो UPSC में क्वेश्चन पूछें वो मैंने कवर कर दिया. एंड इसमें भी थोड़े बहुत ऐसे आर्टिकल्स हैं जो मार्च में रिलीज हुआ, मार्च 1 से लेकर 15 तक. So in this particular aspect also we have certain key points where we have to focus upon, where on and often repeatedly we would be getting certain keywords. वो हम ये पहले पार्ट में देखेंगे. We would also cover some 5 to 6 parts in this particular down to earth magazine so that you would be getting the benefit of this down to earth, so that आपको ज़रूरत ना पड़े कि like you buy it and read it on a separate note. So extreme weather के बारे में था. There was one snippet. Generally these snippets also give us huge information as such. उस पर्टिकुलर स्निपेट में ऐसा हुआ था कि लाइक नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो वो NOAA का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी है, सो दैट हैज़ गिवन वन पर्टिकुलर रिपोर्ट सेइंग दैट January 2024 which is there, it is the warmest on record since 1850. सो अगर आप 1850 से लगभग 150 साल 174 ईयर्स से देखेंगे, ये जो जनवरी में हुआ था. सो हम डाउन टू अर्थ आर्टिकल में वी हैव रेड अबाउट स्नोलेस हिमालयास, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, क्लियर. सो वी हैड वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्नो, ड्राई विंटर्स एक्सपीरियंस किए थे. वो सारे आर्टिकल्स हम पहले पढ़ चुके थे. सो वो इंटीग्रेशन से अगर आप देखेंगे जनवरी 2024 का मीन एवरेज टेम्परेचर्स निकाला गया था एंड दिस अपीयर टू बी द वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड सिंस 1850. तो पूरा जनवरी का जितने भी 1850 से कैलकुलेट किए थे उसमें यही वार्मेस्ट था. सो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर्स भी अगर आप देखेंगे 1.27 डिग्री अबव द 20th सेंचुरी एवरेज ऑफ 12.2. सो 20th सेंचुरी का जनरली एवरेज टेम्परेचर है 12.2 डिग्री सेंटीग्रेड, बट अगर ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर अगर आप देखेंगे ये 1.27 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सेस हुआ था. सो व्हाट माइट हैव बीन द रीजंस अकॉर्डिंगली एज पर US नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जनवरी वाज आल्सो द सेकंड वेटेस्ट रिकॉर्डेड, क्लियर. सो in this particular scenario, what might have been the major reasons as per these particular situations came into picture as such? अगर आप देखेंगे उसका रिपोर्ट दिया, the January का warming records are continuation of the trends being seen since June 2023, possibly due to the strong influence of El Nino impact, है ना. So ये El Nino, La Nina are those particular weather conditions generally which have influence on the global weather phenomena as such. But इंडिया के ऊपर और ज़्यादा उसका significance है. So what is El Nino, what is La Nina, I'll be teaching at you at the end of this particular slide. So and ये जो National Oceanic Atmospheric Administration में ये भी प्रेडिक्ट किया था कि लाइक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पैटर्न इज लाइकली टू शिफ्ट टुवर्ड्स कूलर लानिना कंडीशंस बाय जून और अगस्त दिस ईयर. सो 2023 में पॉसिबली ये बोल रहे थे कि लाइक एल नीनो इम्पैक्ट की वजह से जनवरी के ऊपर असर पड़ा था एंड जनवरी में हम जो स्नोलेस हिमालयास, स्नो माउंटेन विदाउट स्नो, ऐसे जो आर्टिकल्स पढ़े थे उसमें ड्राई विंटर्स के बारे में, वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में पढ़े थे, बिकॉज दीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस दे जनरली क्रिएट snowfalls in and around these Hindu Kush Himalayas as such. So in that particular context अगर आप देखेंगे इधर necessity है what is El Nino and La Nina to be understood, as there was some abnormal phenomena because of this El Nino and La Nina effects. Chances are great that UPSC might pose a question in your prelims as well as mains regarding with the El Nino and La Nina condition. So ये जो El Nino and La Nina condition है, this is bit complex phenomena, but I'll try to make it easy for you so that you would be understanding it better as such. अगर आप देखेंगे this particular El Nino and La Nina phenomena is attached with the Southern Pacific Ocean which is present between Australia and South America. So in general years what would happen is along the coast of the Australia we have one oceanic current
clear, which is generally called as East Australian warm oceanic current. Do remember this, East Australian warm oceanic current. So this East Australian warm oceanic current makes up the mugging up of these particular warmer waters in and around these particular Australian regions in general. So this particular presence of warmer waters here makes the warm air columns to raise upwards. It might be maritime air masses or it might be continental air masses. So these warm air mass which generally tends to lift upwards into the air, we call it as convectional ascent. Generally vertical movement of air, we call it as convection. And there is a convectional ascent along the eastern coast of Australia due to the presence of this warmer waters as such. So air columns which generally ascend into the atmosphere as convectional ascent, they have to move towards the topmost layer of the troposphere, or after reaching the saturation point. Generally the air column having moisture in it will reach saturation point at different heights depending upon the amount of moisture present and depending upon the temperature which is there. So on that basis, once it gets saturated, so it would be cooled, and once the cool air columns which would be there, that tends to descend. And what would happen is, generally from the Australian coast, if you could see, we would be having the descending air column which shall be descending somewhere near to the South American, Peruvian coast or Chile region. इसके आसपास में descend होगा. तो obviously ascending air column जो भी है, यहाँ पे low pressures develop होंगे, because any air column ascending, the pressure within it falls. 100% low pressure conditions have to be developed, and these particular divergence which is there, that divergence makes the wind to descend along the South American coast, creating high pressure conditions. So situations ऐसा हुआ, यहाँ पे warmer waters, low pressure conditions, ascending air, either descending air, cooler oceanic water, high pressure conditions. So as such, what would happen is, here there is high pressure and here there is low pressure. There is some pressure gradient. Pressure gradient का मतलब है the pressure difference which is present between two important locations. So this particular pressure gradient which is there, that makes the movement of surface air. The surface advection बोलते हैं हम. Advection का मतलब है horizontal movement of air. So due to the pressure gradient force developed, the horizontal movement of air near to the surface, ये जो air है, that tends to move from South America towards the Australia, having the surface advection, completing the circulation of the air. So this particular air circulation which has been completed, and this particular phenomena which is there, this phenomena is very common phenomena, which is a regular phenomena happening in the southern Pacific Ocean. इसको हम वॉकर सर्कुलेशन बोलते हैं. है ना? So generally this Walker circulation favors Indian monsoon. Why? Because this particular branch of air column which is raising and diverging and descending at South America, इसमें से और एक ब्रांच जाके डिसेंड होगा somewhere near to Madagascar. मतलब ये ब्रांच इंडियन ओशन ऊपर ट्रैवल करेगा. And as this branch is traveling above Indian Ocean, adjacent to this, so adjacent to this, मतलब ये जो ब्रांच इंडियन ओशन के ऊपर ट्रैवल करेगा, उसके नीचे जो पोर्शन है वो सारे लो प्रेशर्स एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि लाइक दिस रीजन हैज बीन रेज्ड फ्रॉम लो प्रेशर, एयर कॉलम हैज बीन रेज्ड फ्रॉम लो प्रेशर, एंड जहां तक वो डिसेंड होगा, until that junction it experiences, it makes the surface regions to experience low pressures. So as this region, if it is having low pressure, automatically Indian region would be having low pressure condition. It means this branch is called as Indian Ocean branch, Indian Ocean branch of Walker cell. So when Indian Ocean branch of Walker cell is present, it would be present generally when this particular phenomena would happen over here. When Indian Ocean branch of Walker cell is present, we would be having some good arrival of monsoon. It means Walker circulation is going to help the perfect arrival of monsoon, which hence favors the Indian climate. This is what the condition is.
बट विद इन सम साइकिल ऑफ 3 to 5 years, पहले तो 3 to 5 years का साइकिल था, अभी इट हैज बिकम 2 to 7 years साइकिल, मतलब हर 2 साल में, हर 3 साल में, हर 4 साल में what would happen is the regular condition which would be there, it means ये जो piling up of water of warm oceanic water है, these warm oceanic waters generally moving along the southern Pacific region, यहां पे एक ओशनिक करंट होगा, उसको हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बोलते हैं. सो दिस ईस्ट ऑस्ट्रेलियन वार्म ओशनिक वाटर दे doesn't mix up with this west wind drift. They generally move parallelly along with this particular west wind drift and reaches the South American coast as such for the moment circulation. So within some cycle of 3 years, 4 years, 5 years, there shall be certain scenario for a temporary phase where warmer oceanic water present along the South American coast would be more relatively with that of Australian coast. So here we would be having huge piling up of warmer oceanic water. मतलब ऐसा दिखेगा कि लाइक यहाँ पे जो वार्मर वाटर है, इससे भी ज्यादा वार्मर वाटर ड्यू टू पाइलिंग अप वी वुड बी एक्सपीरियंसिंग हियर. तो तब क्या होता है, देयर शैल बी चेंज एंड शिफ्ट इन प्रेशर्स. यहाँ पे जो लो प्रेशर था वो साउथ अमेरिका पे पहुंच गया. एंड एज यू नो, लो प्रेशर के ऊपर ऑब्वियसली लो प्रेशर का मतलब असेंडिंग एयर कॉलम हुआ होगा, एंड दैट नाउ विल डिसेंड अलोंग द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, क्रिएटिंग हाई प्रेशर्स अलोंग द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट. सो दिस शिफ्ट इन प्रेशर विच इज देयर, it is called as southern oscillation. The shift in pressure which we generally observe, it is generally considered as southern oscillation. So this particular southern oscillation which is there, the high pressure shift to low, low pressure shift to high, this makes the surface winds to move from Australia to South America. अर्लियर कहां पे मूव हो रहा था, ये साउथ अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक मूव हो रहा था, बट अभी विंड्स विड बी मूविंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टुवर्ड्स द साउथ अमेरिकन कोस्ट. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सो द एंटायर सर्कुलेशन जो ऐसा होना था ये अभी ऐसे होने लगा, मतलब कंप्लीट रिवर्सल है ना. सो ये रिवर्सल ऑफ विंड्स जो भी हैं इसको हम एल नीनो बोलते हैं. द रिवर्सल ऑफ विंड्स विच आर देयर उसको हम एल नीनो बोलते हैं, रिवर्सल ऑफ वॉकर सर्कुलेशन को. बट इन जनरल 90% ऑफ टाइम्स दिस शिफ्ट इन प्रेशर इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द रिवर्सल ऑफ द विंड. सो सदर्न ऑसिलेशन एंड एल नीनो कम हैंड बाय हैंड मोस्टली. सो दैट्स द रीजन व्हाई वी यूज ए टर्म कॉल्ड एज एनसो. एनसो का मतलब है एल नीनो प्लस सदर्न ऑसिलेशन. Are you getting this point? So on and often in newspapers we would be seeing this particular scenarios like El Nino, southern oscillation and all. तो when वॉकर सर्कुलेशन था तो तब क्या हुआ था, इंडियन ओशन के ऊपर एक ब्रांच चला था, इंडियन ओशन के ऊपर लो प्रेशर आया था एंड वी हैड ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉनसूनल विंड्स कमिंग एंड अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स इंडिया, क्रिएटिंग गुड रेनफॉल, फेवरिंग इंडियन क्लाइमेट. बट जब ये एल नीनो सिचुएशन आएगा, अर्लियर तो 3 to 5 years को एक बार ये साइकिल होता था. This is a regular cycle which generally happens. But अभी due to global warming and climate change, increasing greenhouse effect की वजह से क्या हुआ, this El Nino event started attaching for every alternate year cycle. So which is creating some havoc situation in the Indian Ocean and hence the Indian climate. Why? Because यहाँ पे जो प्रेशर है, अभी यहाँ पे तो असेंडिंग एयर कॉलम नहीं है ताकि वो इंडियन ओशन ऊपर के जाए, तो यहां पे जो हाई प्रेशर है, दिस हाई प्रेशर वुड बी कंटिन्यूड इन इंडिया. लो प्रेशर नहीं रहेगा इंडियन ओशन के ऊपर. सो इंडियन ओशन के ऊपर जो ये हाई प्रेशर कंडीशन का फिनोमेना जब दिखेगा, वी वुड बी एक्सपीरियंसिंग द मॉनसूनल विंड्स विच डोंट ड्राइव टुवर्ड्स इंडिया बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर कंडीशंस मेंटेन्ड इन इंडियन ओशन, रिजल्टिंग इनटू फेलियर ऑफ मॉनसून. Hence it influences the Indian climate. Then we would be experiencing droughts. इसका मतलब एल नीनो और एनसो सिचुएशन अगर होता है, so उसका रिजल्टेंट होगा कि like we would be experiencing droughts in India, Australia, but as we have ascending air column along South America, we would be experiencing huge immense dreadetic rainfall. वही वॉकर सर्कुलेशन में ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में गुड बारिश हो रहा था, साउथ अमेरिकन रीजन में we were experiencing some dry conditions. Okay,
सो ये वॉकर सर्कुलेशन था। एल नीनो ईयर में क्या होता है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन्स वुड बी एक्सपीरियंसिंग ड्रॉट्स along the eastern Australian coast, but South American region would take the benefit of El Nino by experiencing the rainfalls over there. So this doesn't only have some impact on these Indian climatic phenomena, it has some global impacts along the global level. So during this El Nino condition, what would happen is, due to the weakening of trade winds, the Mediterranean type of climate, generally which is in and around Mediterranean Sea, countries जो भी Mediterranean Sea के आसपास में है, उसका लोकेशन मार्क कर लो थोड़ा, इस बार क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो वहां पे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में विंटर मैक्सिमम रेनफॉल्स वुड बी देयर, दैट विंटर मैक्सिमम रेनफॉल्स वुड बी वीकेंड ड्यू टू दिस एल नीनो कंडीशन, एंड दैट हेंस फर्दर वीकेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। एंड ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है जनरली मेडिटेरेनियन सी से लेके मिडिल ईस्ट को पार करते हुए दे रीच इंडिया इन द नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, एंटरिंग इनटू द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, क्रिएटिंग रेनफॉल्स देयर. And along the Hindu Kush Himalayas and in general Himalayan structure, they generally tend to create snowfall. तो अभी इस बार एल नीनो की इंपैक्ट की वजह से we had weakened western disturbances which had reduced the snowfalls in Himalayas, Hindu Kush Himalayas and Indian Himalayas, which further has reduced the snow because वो जो common precipitation snowfall होगा वहां पे वो कम हुआ. दैट्स वाई हिमालयास एक्सपीरियंस्ड ड्राई विंटर्स दिस टाइम. ये याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो एल नीनो का इंपैक्ट इंडिया के ऊपर भी पड़ा था एंड हिमालयास के ऊपर ड्राई विंटर्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, विंटर रेनफॉल के ऊपर भी पड़ा था. सो ये एल नीनो फिनोमिना, एज इट्स अ रेगुलर फिनोमिना, वी कैन स्टॉप इट. अर्लियर दिस साइकिल वाज एसोसिएटेड विद 3, 4, 5 years के बीच में एक बार आता था, बट अभी 2 साल के ऊपर, 3 साल में, एवरी ऑल्टरनेट ईयर ऑलमोस्ट. सो ये ग्लोबल वार्मिंग से हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको. एंड एल नीनो जनरली इट इज ए टेम्पररी फिनोमिना, क्योंकि ये जो वार्मर वाटर सदर्न अमेरिकन के ऊपर के पास में जो वार्म वाटर्स है, दे जनरली टेंड टू हैव ए शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑस्ट्रेलियन रीजन एंड हेंस गेटिंग बैक टू द नॉर्मल सिचुएशन दैट ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंसिंग लो प्रेशर कंडीशंस एंड साउथ अमेरिकन एक्सपीरियंसिंग हाई प्रेशर कंडीशंस. But sometimes the pressure might fall completely. Like ये जो shifting हो रहा है नॉर्मल पोजिशन को, एल नीनो से वॉकर को, नॉर्मल ईयर को, ये लो प्रेशर्स कैन शिफ्ट टू लो प्रेशर्स एंड हाई प्रेशर्स माइट डायरेक्टली इंक्रीज टू हाई प्रेशर्स. वो जो एक्सट्रीम फिनोमिना होगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज लानिना कंडीशन. सो लानिना कंडीशन को आप यहां पे दे सकते हैं. सो लानिना कंडीशन में एक्सट्रीम लो प्रेशर्स हियर, एक्सट्रीम हाई प्रेशर्स हियर. सो यहां पे अगर एक्सट्रीम लो प्रेशर्स हैं, that tends to create low pressures in Indian Ocean, creating excessive amount of rainfalls resulting into floods. And ये जो US National Oceanic Atmospheric Administration ये क्या बोल रहा है, 2023 में एल नीनो इम्पैक्ट था, बट अभी इस साल लानिना शिफ्ट होके थोड़ा कूलर कंडीशंस होने का चांसेस है. मतलब इसका मतलब इस साल इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है एंड तगड़ा बारिश होने वाली है एंड फ्लड्स के जैसे बारिश होने वाले हैं. सो वी हैव टू बी रेडी रिगार्डिंग विद दिस. सो हो सकता है एज एल नीनो लानिना इंपैक्ट्स का इन्फ्लुएंसेस है, यूपीएससी में इसके बारे में क्वेश्चंस आ जाएंगे. सो मेक श्योर दैट यू रीड अबाउट दिस एल नीनो फिनोमिनास एंड लानिना फिनोमिनास. इसके आगे जाके अगर हम देखेंगे, वी वुड बी हैविंग दिस एल नीनो कंडीशन अगेन विद इन 2 years और 3 year साइकिल. तो ये कंटेम्पररी टॉपिक है. एक्सक्लूसिवली इसका इंपैक्ट इंडियन क्लाइमेट के ऊपर तो देखो, वर्ल्ड क्लाइमेट के ऊपर देखना नहीं देखना वो अपने ऊपर है. टाइम है तो बिल्कुल देखिए, अगर टाइम है तो प्रिसाइज टाइम है. इंडियन क्लाइमेट तो एटलीस्ट देख लिए, एल नीनो का इंपैक्ट, लानिना के इंपैक्ट इंडियन क्लाइमेट के ऊपर कैसे असर पड़ेगा. Regarding this point, so please try to learn this El Nino La Nina conditions as much as possible. Thank you for watching this lecture. Hope you have liked it. Please do like it and share as many as you can so that it would reach the required. So please subscribe to APPSC channel and click on the bell icon for continuous notifications. Thank you for watching this, and if you want us to make more and more videos, please do drop in the comment sections, and if you want us to make some videos, please do drop the topic name in the comment section so that we would be making a video. Thank you for watching this. Have an awesome day.
जय हिंद।